Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 4th December. Session will be quite interesting and important, students. Stay tuned with us till the end. In this video, students, we are talking about PM Awards for Excellence in Public Administration. Then India, Maldives, they conducted a joint exercise, that is Equivalent 2025. It was held where? In Trivandrum, Kerala. Then Ministry of Tourism, they have signed an MOU with MasterCard to establish India as a global tourism hotspot. And Bharat Dynamics, they have secured orders worth 2400 crore rupees from the Indian Army. All these things and many more will be discussed in this video, students. So stay tuned with us till the end. If you are new here, I want you all to subscribe to our channel. We are one-stop solution for current affairs. Let's start with national affairs, students. Recently, Government of India has approved Prime Minister Awards for Excellence in Public Administration, right? This is to acknowledge, recognize and reward the outstanding work by various civil servants across India, right? For civil servants, for acknowledging their work, this award, that is PM Awards for Excellence in Public Administration, was approved by Prime Minister Narendra Modi. When will these awards be presented? These awards will be presented on 21st of April next year in 2026, right? And this day, why? Because this day marks Civil Services Day. This is your Civil Services Day, correct? Where these awards will be presented? At Vigyan Bhavan in New Delhi. These awards, they will include a trophy, a scroll and an incentive of 20 lakh rupees to the awarded district or organization for project implementation or for the welfare needs. The awards will be in 3 categories. What are these categories? Holistic development of district, aspirational block program and innovation for central ministries or department, states or districts. So these are the 3 categories under which these awards will be presented. Then apart from this, students, here remember Prime Minister Narendra Modi has also unveiled Pratibha Setu. What is this Pratibha Setu? Pratibha Setu. This is basically to harness the UPSC talent so that they can be used, those individuals can be used for public and private sector jobs. Another thing, remember a renaming of a railway station, that is Aurangabad railway station. It will be renamed to Chhatrapati Sambhajinagar. I repeat, Chhatrapati Sambhajinagar railway station. Where is this railway station? It is in Maharashtra. So remember this renaming. Moving on, next is India, Maldives. They together conducted an exercise by the name Equivalent. This exercise was held in Trivandrum, Kerala. This is the location, students, and I want you all to remember this location. This is important, right? So it is India and Maldives, right? The army, Indian Army and Maldives Army, they together conducted this exercise. And in Maldives Army, it is basically Maldives National Defense Force, right? This is the 14th edition of this exercise that was held. This is a bilateral military exercise Equivalent held in Trivandrum, Kerala. This is a 2-week long exercise, right? That will conclude on 15th of December. Correct, students? Then from Indian side, who will take part here? This is also the question that can be asked here. So from Indian side, 45-member Indian Army Battalion, that is Garhwal Rifles, will be taking part here. Then students, apart from this, remember recently Southwest Airlines, right? They are setting up a global innovation center. And where is this center being set up? It is in Hyderabad, Telangana. Then apart from this, Ola Electric, correct? They have entered India's 1 trillion rupees
battery storage market with the launch of Ola Shakti. Ola Shakti residential solution. They launched a battery here, right? So Ola Shakti is the name of the battery that was launched by Ola Electric. Next is Ministry of Tourism. They have signed an MOU with MasterCard to establish India as a global tourism hotspot. I repeat, Ministry of Tourism, they signed an MOU with MasterCard for a period of 2 years with an aim to promote India as a global tourism hotspot. So this MOU is for 2 years and this is to promote tourism in India. As tourism will be promoted, with this we will be seeing there will be a boost in economy, because when there is a tourism, right, people will be coming, the tourists will be coming and they will be spending money. The money will be spent on various hotels, food, leisure activities, right? So in them, from them, a lot of economy is being derived in our country, right? So this, the aim here is to boost the digital payment in tourism here and also to provide better destination experiences. Also under this, various key hotspots such as your Goa, Varanasi and Andhra Pradesh will be promoted here. Then apart from this, remember students, it is Reliance. They partnered with Meta, right? That is earlier known as Facebook, and they have partnered and set up a joint venture. They will be working upon AI products in India. And for this joint venture will be worth almost 855 crore rupees. Next is Bharat Dynamics. They have secured orders worth 2,400 crore rupees from Indian Army. I repeat, Bharat Dynamics Limited, they secured additional defense contracts worth 2,461 crore rupees from the Indian Army for the supply of anti-tank guided missiles and surface-to-air missiles through an emergency procurement process. Right, these orders are worth how much amount? 2,461 crore rupees. They are for anti-tank guided missiles and surface-to-air missiles. Right, students, take a note of this. Then apart from this, students, if I ask you which edition of Infantry Day or Infantry Raising Day was observed by Indian Army recently, so it is the 79th edition of the Infantry Raising Day that was observed. Next is international affairs, students. India has finished 8th at the World Skills Asia Competition 2025 in Taipei, Taiwan. Right, I repeat, this was the 8th edition of the World Skills Asia Championship or Asia Competition. This was held where? Location Taipei in Taiwan, and this was held from 27th to 29th of November, correct? And this was the debut participation of India. That means this is the first time our country is participating in this event, that is World Skill Asia Competition. And here our country finished at 8th position, right? And who won the medal tally here? Let me show you. It is UAE that secured the top position here. United Arab Emirates with a total of 10 awards, that are 4 gold, 4 silver and 2 medallions for excellence. Right? Then it was Saudi Arabia on 2nd and Malaysia on 3rd, and our country India was on the 8th position. Then if we talk about this World Skill Asia Competition, this was the 3rd edition of the event that was held lately. Correct. Moving on is banking and finance, students. RBI's annual report of Ombudsman Scheme 24-25 was recently released, and it stated that the complaints are up by 13.55%. Loans and credit cards lead the grievances. What does this mean is that this Ombudsman scheme is basically, Ombudsman is in where the problems, grievances of individuals are solved, right? So for example, here they are saying that the loans and credit card grievances are leading here. That means more number of complaints by the customers are in the category of loans and credit cards, right? And here they are saying that the complaints has increased by 13.55%. And this is also a good news. Why? Because now the individuals, the customers, they are now reporting those complaints, right? They are reporting those grievances to the individual here, so that the organization, right, they can take a proper step in order to resolve their problem, in order to resolve their grievances, right? So this is good news. But on the other hand, the complaints are increasing. That means there is some structural problem that need to be taken care of and resolved. And this report is also saying that the maximum number of grievances are coming from the loans department and credit card department.
Another question can be asked is that according to this annual report of the Ombudsman scheme, which is the state that is leading with the maximum contributors, or that is the maximum contributor for these complaints? So on the top it is Chandigarh, followed by Delhi, then Gujarat, then it is Maharashtra, and then it is Rajasthan. Right? Maximum are from Chandigarh, Delhi, Gujarat, Maharashtra, and Rajasthan. Correct? Take a note of this, students. This is important. Then apart from this, if we talk about India and Asian Development Bank, they have together signed a $800 million loan agreement for the development projects in Maharashtra, Madhya Pradesh, and Gujarat. I repeat, India and Asian Development Bank, they have signed three major loan agreements. Three loan agreements has been signed here. These are for three different states: Maharashtra, Madhya Pradesh, and Gujarat. Let me show you that for Maharashtra, the grant is for $500 million for power distribution enhancement and agriculture solarization. For Madhya Pradesh, the grant is of $190 million for Indore Metro Rail project. And for Gujarat, the loan is worth $110 million. Correct? It is for skill development, for promoting skills in Gujarat. Then there is a grant for Assam also, students. For Assam, it is $1 million for Swift Wetland and Fisheries project. And as a whole for India solar rooftop project, 650 million policy-based loan will be provided to scale the rooftop solar scheme in India. So these are certain loans for Maharashtra, Madhya Pradesh to Gujarat. Then for Assam also $1 million, and for promoting the solar rooftop scheme in India, for promoting the rooftop installations of solar panels, $650 million has also been approved. Apart from this, students, India Maritime Week, right? It was inaugurated where? It was inaugurated in Mumbai, right? And here 1 trillion rupees vision was shown for maritime for the maritime sector in India. Then Vigilance Awareness Week was observed. There is a theme that I want you all to remember for this Vigilance Awareness Week, that is Vigilance our shared responsibility. Vigilance our shared responsibility. This is the theme I want you all to remember. Next is SBI, HDFC Bank, and ICICI Bank. They have continued to be identified as the domestic systematically important banks as per the RBI, that is Reserve Bank of India, right? These DSBIs, that is domestically systematic important bank, right? These are basically those banks that are considered too big to fail. That means if these fail, right, it will lead to a crisis in India, right? And the government will interfere in order to make sure that these banks do not fail. Correct? So it is SBI, State Bank of India, and ICICI Bank. They are considered as too big to fail, and they are considered and identified as domestic systematically important banks as per RBI. Right, students, take a note of this. It is important. If we talk about RBI, who is the governor of RBI? Sanjay Malhotra is the governor of RBI. Then, students, next remember, it is Saudi Arabia. They have recently abolished kafala system. Your homework is to tell me, students, what is this kafala system? This is your homework. Comment below. Moving on, SEBI has approved 10,000 crore rupees IPO of ICICI Prudential Asset Management Company. I repeat, SEBI, they have approved 10,000 crore rupees IPO, that is initial public offering, right? And it is of ICICI Prudential Asset Management Company. SEBI has also approved IPOs of Pavrica Limited, Technocraft Ventures, and Anu Projects. Right, students, recently Physics Walla's IPO was also launched and it has shown good result, right? Lately, multiple IPOs are coming and India is growing into a IPO market where multiple organizations, they are launching their IPO. Even both now they are planning to launch their IPO also, right? Then next students, if I ask you, recently Global Peace Prayer Festival, Global Peace Prayer Festival, this was hosted by which country? It is Bhutan that hosted this Global Peace Prayer Festival, and in Bhutan it was held in Thimphu. Next is RBI has approved Razorpay as a cross-border payment aggregator.
Payment aggregator is basically when an organization, they can send money and receive money on the basis of merchants, right? And it is cross border. That means not just in India, but outside India also we can send money and receive money on the basis of payment, right? That means RBI Razorpay now can do this transactions, right? And RBI has recently granted and approved the cross border payment aggregator status to Razorpay. Apart from this, students, tell me who recently is the India's next ambassador to Ireland. Manish Gupta. Take a note of it. Then next is economy and business, students. India's FDI inflow rises 18% to $35.18 billion from April to September, and inflows from the USA has almost doubled as per the data released by Ministry of Commerce and Industry. We are talking about foreign direct investment, right? That means this data is saying that there is an increase of 18% in the FDI. That means the amount of money that we received during April to September in FY26 is almost 18% increase to $35.18 billion. Also, it is saying that the amount of money that we used to receive from USA has almost doubled during the same period compared to last year. It is at $6.62 billion now. Right, students? Take a note of this. Similarly, here remember, we are seeing for computer software and hardware $9 billion, for service sector $5 billion, for trading it is $2.78 billion, and the country from which we receive the highest FDI is Singapore. It is $11.94 billion, from USA $6.2 billion, from Mauritius it is $3.47 billion, right? Take a note of this, important. Then another thing you need to remember is top 5 investing countries, right? That is Singapore is on the top. That is, these are the countries that are investing in India. These are the countries from where we are receiving the foreign direct investment. So on top it is Singapore, second USA, third Mauritius, fourth UAE, and fifth is Cayman Islands. Apart from this, remember the states in India that are receiving these FDI, and the state that received the highest FDI is Maharashtra, followed by Karnataka, then Tamil Nadu, then Haryana, and then it is Gujarat. Next is OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, right? OECD, they have released their biannual report, that is OECD Economic Outlook. Right, in this they are projecting that India's GDP growth rate for FY26 be at 6.7%. Let me show you some other data, that 6.7% for FY26, 6.2% for FY27, and 6.4% for FY28. And also the inflation here is 1.9% in FY26, 3.4% in FY27. And here you can see the global projection, that how much globally we will be growing. Next is awards and recognition, students. Armand Duplantis, right? McLean Levon named the World Athletes of the Year 2025. First of all, here Armando Duplantis, right? He's an Olympic champion, right? He's from Sweden, right? And he's a pole vaulter, right? His event is pole vault. Then Sydney McLean Levon, as you can see her in the picture here, right? She's an American. Her event is sprint, right? So they have been named as the World Athlete of the Year in men's category and in women's category. Take a note of this. And here Duplantis has won the Men's Athlete of the Year title for third time in a row. That is, he won this in 2020, then in 2022, and now again in 2025. Correct? Take a note of this. Important. Right? So for World Athlete of the Year, Armando Duplantis in the men's category and Sydney McLean Levon in the women's category. Next is West Bengal's Darjeeling Mandarin Orange has received the GI tag. This is the orange. This is the Mandarin Orange. It is grown in West Bengal's Darjeeling, and they have received the GI tag here. Right? Take a note of this. Direct question can be asked here. Moving on. Apart from this, students, if I ask you, tell me recently, Atlas. This is the name of the web browser that was launched by OpenAI. Right? Web browser name is Atlas, that was launched by OpenAI. Then apart from this, students, if I ask you,
Chavangkut. This is a festival. Chavangkut celebrated where? It was celebrated in Manipur. Right? Then Kerala. It became the first state in India that have declared themselves from or they have declared they are free from extreme poverty. They have eliminated extreme poverty. Next is science and technology students. DRDO, they have successfully tested the fighter aircraft escape system in Chandigarh. So where was this fighter aircraft escape system tested? It was tested in Chandigarh, and this system is basically will help the pilot to escape in emergency situations. Right here you can also see a pilot is being escaped from the fighter jet here, right? So DRDO, they successfully tested this fighter aircraft escape system. It was tested in Chandigarh, Haryana, and the test achieved a control velocity of 800 kilometers per hour and successfully validated all the key functionalities of this system. And here this system will be used in light combat aircraft Tejas. Moving on, next is students, Indian Army, they conducted a combat launch of BrahMos supersonic cruise missile in Bay of Bengal. So it is Indian Army, they tested what? They tested BrahMos supersonic cruise missile. They tested this where? They tested this in Bay of Bengal. Right? Take a note of this. Direct question again can be asked from this. Moving on, next students, next is important days. International Day for the Abolition of Slavery was observed on 2nd December, and this day is annually observed across on 2nd of December to raise awareness about ending modern slavery and abolishing the human trafficking. Right? And one more thing, remember, this day is observed on 2nd of December, and this is the 76th observance of the Convention of the Suppression of the Traffics in Person. First time this day was observed in 1951. Next is International Day of Persons with Disabilities, observed on 3rd of December, and this day is observed to raise awareness and promote the rights, dignity and well-being of the persons with disability. There is a theme here, students, theme being fostering disability, inclusive societies for advancing social progress. This is the theme here that I want you to remember, and first time this day was observed in 1992. Next, students, is state news. Bihar government has launched Mukhyamantri Bharat Darshan Yojana for secondary students. Right? This is Mukhyamantri Bharat Darshan Yojana. This is basically to provide the opportunity to the secondary students or secondary school students, right, to explore India, to explore the historic, cultural and national heritage of India, so that they can know about India, they can know about various heritages in India, correct? Hence this was launched here. So take a note of this. This is your Mukhyamantri Bharat Darshan Yojana, launched by the Bihar government. It was launched specifically for whom? It was launched for the students of secondary school, and this will be helping them to explore India's cultural, natural and historic sites. So that's all for the day, students. These were your important current affairs. Now, apart from this, if I ask you which is the first company to achieve $5 trillion market cap, it is Nvidia. Right? It is Nvidia. Then COP30, during COP30, Baku to Belém roadmap, this was adopted. Then UAE, they are establishing a India House in Abu Dhabi. Then it is Maldives. They have became the first country in the world. They have enforced a generational tobacco ban, and all those individuals born after 2007, they will be banned from the use of tobacco. So that's all for the day, students. These are your important current affairs. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. Also, students, we upload the daily current affairs video at 5 AM in the morning. The videos that we upload here, right, this is the video, and the content provided here is top notch, as you must have seen, and it is provided in a very refined way to help you grasp the content for competitive exams. Based on these videos, we upload weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise video. These topic wise, these videos, monthly, weekly and topic wise, they include MCQs, right? And these MCQs are quite beneficial for you all in preparation. So now let's move to the revision part.
You have to now find the incorrect statement regarding the launches made during the 4th anniversary of Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan held in October. Here also, if we look at the option and we have to find the incorrect, B is right, C is right, A is our answer, which is incorrect. It is saying Union Minister Piyush Goyal launched PM Gati Shakti offshore to strengthen inland waterways transport under the blue economy. Is it so? So, right, this was launched, right? Basically, what is this PM Gati Shakti? It is a platform that is a digital platform launched by the logistics division of the DPIIT, and it will promote sustainable, not inshore, right? It is not inshore, but is the offshore. It is to strengthen the offshore development by enabling multi-layered analysis and visualization, strengthening the India's blue economy. Correct? Next is identify the state or union territory where Union Minister Nitin Gadkari inaugurated and laid the foundation stone for 3 national highway projects worth over 2,000 crore rupees in October. So right option is Puducherry. Next, name the scheme launched by Union Minister K.R. Naidu, right, to provide affordable and predictable regional air travel across India. So right option is Fair Se Fursat. Next, which organization partnered with Minister K.R. Naidu, right, we just saw. Next is which organization partnered with Google Cloud India to establish India's first AI Center of Excellence for Public Good in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So, which is that organization? It is Tech Bharat Research Foundation. Next, mention the scheme under which the Ministry of Minority Affairs established a Center of Excellence to promote and preserve India's heritage and classical languages. Right option is Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. Next, in October, Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami has inaugurated newly developed various pulse varieties under the 118th All India Farmers Fair and Agriculture Industry Exhibition that was held at GB Pant University of Agriculture and Technology in Uttarakhand. Next, in October, the Government of India announced an extension in the tenure of the 16th Finance Commission. What is the new deadline for the submission of their report? So, the new deadline here is 30th of November 2025. Next, mark the incorrect statement regarding the 238th meeting of the Central Board of Trustees of the Employees Provident Fund, chaired by Union Minister Dr. Mansukh Mandviya in October. If we look at the option, we have to find the incorrect. B is right, C is right, A is our answer. A is saying that the CBD launched the Vishwas scheme to provide new employment opportunities under the Employees Pension Scheme of 1995. Right? So, is it correct? No, this option A is wrong. It is saying that the CBD launched the Vishwas scheme to resolve the long-standing dispute, right? Not to provide new employment opportunities, but to resolve the long-standing disputes. Next, Ministry of Mines, they have recently reclassified which mineral as the major mineral to boost ease of doing business and enhance the rural income. So, it is which ministry? The Ministry of Mines. And what is the mineral here? It is limestone. Identify the person who was sworn in as the CEO of the Bodoland Territorial Council in Assam. So here if we see Hagrama Mohilri, correct, was appointed or sworn in as the CEO, that is Chief Executive, not CEO, Chief Executive Member of the Bodoland Territorial Council. Bodoland is basically a tribal community of Assam. Next, who was appointed as the new Prime Minister of Madagascar in October, succeeding Christian Nesty. So here, General Rufin Fortunat was appointed as the new Prime Minister of Madagascar. Next is who has been appointed as the new Executive Director of RBI starting from 3rd March 2026 as announced in October. So if we look at the following here, Sanjay Kumar Hansda will be the new Executive Director of RBI. Next, identify the sportsperson who was appointed as the English Premier League Ambassador in India in October to promote football across India. So here, Sanju Samson, right, the Indian cricketer, was officially appointed as the English Premier League's ambassador, marking the expansion of football in India. Next, identify the European country where Sebastian Lecornu was reappointed as the Prime Minister by Emmanuel Macron. So it is for France. Next,
Next is who has been appointed as the president of PhD Chamber of Commerce and Industry. I repeat, who has been appointed as the president of the PhD Chamber of Commerce and Industry for period 25-26. So Rajiv Juneja has been appointed here. Next, who has been appointed as the new executive director of RBI starting from 9th of October here? Sonali Sen Gupta. Next, identify the person who has been appointed as the first deputy managing director of International Monetary Fund. So right option is Dan Katz. Next, which organization has re-elected Mahavir Lunawat as their chairman for a second consecutive 2-year term starting from October 2025. So which is this organization? It is Association of Investment Bankers in India. Next, identify the automobile company that appointed Tarun Garg as their managing director and chief executive officer, marking him the first Indian to lead the firm since their inception in 1996. It is which firm? Name that organization. It is HMIL, that is Hyundai Motors India Limited is the right option. Option 2 is the right option. Next is name the person who has been appointed as the president-elect for the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, that is for FICCI. Name the person who has been appointed as the president of FICCI here. So right option is Anant Goenka has been appointed as the president of FICCI. Next is which global insurer and asset manager appointed Ritu Arora as the country head for India started immediately, that is effective immediately. She will be starting her position immediately. So which global insurer we are talking about? Alliance Group we are talking about. Next is in October, Gujarat state government under the Chief Minister Bhupendra Patel expanded their cabinet, including 19 new ministries and retaining 6, bringing the total strength to 26. During this expansion, who was the elevated as the Deputy Chief Minister, becoming the 5th Deputy Chief Minister of the state. So here, Harsh Ramesh Kumar Sanghvi, correct, has been appointed as the 5th Deputy Chief Minister of the state. Next, in October, ACC approved the 3-month extension for A. Robert J. Ravi as the chairman and managing director of Dash and Dash, right? So for ACC, they have recently they have approved the 3-month extension for A. Robert J. Ravi as the chairman and managing director of Bharat Sanchar Nigam Limited and Mahanagar Telephone Nigam Limited, that is for BSNL and MTNL. Next is who was elected as the president of ICA, Indian Cricket Association, becoming the first woman to lead the organization here. So right option is Shanta Rangaswamy, right? She has become the president of Indian Cricket Association and became the first woman to lead this organization. Next is mention the tenure of Justice Pratibha M. Singh of Delhi High Court as the chair of the World Intellectual Property Organization, that is WIPO Advisory Board of Judges, as announced in October. So she will be in this position. Question asked is what is the tenure of this? The tenure here is from 2025 till 2027. Next is who was elected as the Japan's first female prime minister in October. So here Sanae Takichi, right? Sanae Takichi was appointed as the Japan's first female prime minister in the month of October. So right option is option 1. Next is who was sworn in as the transitional president of Madagascar in October after a military coup confirmed by the High Constitutional Court of Madagascar. So Michael Rendrian, right, has the leader of the Elite Army Corps of Personnel and Administrative and Technical Services Army Unit, sworn in as the transitional president of Madagascar. Next, how long will India's Hitesh Kumar S. Makwana, elected to serve as the co-chair of the United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific, along with Woo Sung Chu from the Republic of Korea in October? Right option is 2025 till 2028, and here Hitesh Kumar, he will co-chair the committee along with Woo Sung Chu. Next, mention the country that partnered with India in October for a counter-terrorism training at the NSG campus in Manesar, Haryana, focusing on the drone threats. So it is European Union.
Next, which international convention re-elected India as the vice chairperson of the Bureau for the Asia Pacific during the 10th session of the Conference of Parties held at UNESCO headquarters in Paris, France in October? So right option here becomes it is International Convention Against Doping in Sports, that is ICADS. Right, students? Next, name the African country that partnered with the government of India in October to establish the first Indian Institute of Technology campus. It is Nigeria. Right, it marks a significant step in bilateral cooperation in the field of education. And this is the second IIT campus in Africa. First was IIT Madras, that was in Zanzibar. That was in Zanzibar in Tanzania. Right? Next, mark the correct statement regarding the 16th session of the United Nations Conference on Trade and Development held in October at the Geneva, Switzerland. Here, if we have to find the correct statement, so option A, B, and C, all three of them are rightly mentioned. Next is choose the country that remained the FATF on the FATF grey list following the 4th Financial Action Task Force plenary meeting held in Paris, France from 22nd to 24th of October under the presidency of Elisa de and the Mazzaro of Mexico. So choose the country. It is Kenya. Right? It remained of the FATF list. Students, FATF is basically a list or a financial action task force. They releases this grey list. And this grey list is basically what list? It contains the name of the countries that are doing terror financing. Right? So recently Kenya, it remained on the grey list here. Very important. Then Burkina Faso, South Africa, Mozambique and Nigeria, these are the 4 countries. They were removed from the grey list. Next, who has been elected as the first Asian chair of the IUCN Species Survival Commission for 2026 to 2029 term during the IUCN World Conservation Congress held from 9 to 15th of October in Abu Dhabi, UAE. So who has been elected as the first Asian chair here? Vivek Menon. He has been elected an Indian wildlife conservationist, environmental commentator, author and photographer, was appointed or elected as the chair of the IUCN, that is International Union for the Conservation of Nature Species Survival Commission. Next, where was the UN Convention Against Cybercrime held in October, marking the establishment of the world's first global framework to prevent and combat cybercrime? So, Hanoi, Vietnam is the right option here. Next, in October, IUCN officially adopted which motion? So they officially adopted motion 007 on security law, marking the first ever recognition of soil security as central to food systems, water supply, biodiversity protection and climate resilience. As per the amendments notified by the Ministry of Textile in October, the minimum investment required under the production-linked incentive scheme for the textiles in the Part 1 category has been reduced from 300 crore to what? So the minimum investment has been reduced from 300 crore to just 150 crore rupees. Next, World Habitat Day was observed globally on 6th of October with the theme Urban Crisis Response in India. The theme, this day was observed in New Delhi with the theme Urban Solutions to Crisis under which ministry? So it was held under which ministry? It is Ministry of Housing and Urban Affairs, right? Under which this World Habitat Day with the theme Urban Solutions to Crisis was observed. Next, identify the state that declared the year 2025 as the year of urban development, marking 20 years since the launch of the well-planned city development project initiated by the Prime Minister Narendra Modi. So it is identify that state. It is Gujarat state that declared the year of urban development. Next, which of the following ports has been recognized by the Ministry of New and Renewable Energy as Green Hydrogen Hub under the National Green Hydrogen Mission? So which of the following port? All three of them. Deen Dayal Port Authority, V.O. Chidambaram Port in Tamil Nadu and Paradip Port Authority of Odisha. Next, identify the government organization that has announced the 4th edition of their flagship initiative, SPARK, that is Studentship Program for Ayurveda Research Can, to nurture young Ayurveda researchers. So, right option here is Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. Moving on, name the Indian institute that collaborated with the Greater Bengaluru Authority and Indian Institute of Science
in Bengaluru for World Bank funded Bengaluru Water Security and Resilience Project. It is Indian Institute of Madras or Technology, IIT Madras. Next, name the organization that released the report titled Roadmap for Job Creation in the AI Economy to Transform India into a Global Hub for AI Talent. So, name that organization that released this report. It was released by Niti Aayog. This will examine how AI is reshaping the tech service industry through the lens of work, worker, and workforce. Next, identify the correct statement regarding the agriculture initiatives launched by Prime Minister Narendra Modi in October. If we look at the options here, all three of them will be rightly mentioned. Next, students, is our homework section. First question is, who became the first billionaire or first football billionaire? Second question, tell me recently, which company is setting up the Asia's largest data center in India and the location where this data center will be set up. Third question, students, tell me recently ICICI Bank, they partnered with which, is it Visa, MasterCard or RuPay, right? So ICICI Bank partnered with which one of them to launch a corporate Sapphire Forex card. Then fourth question, recently NPCI, they partnered with which organization to integrate UPI in their ecosystem for promoting UPI transactions globally. Then fifth question, tell me recently RBI, they have issued a letter of caution to which bank, right, over KYC compliance. So RBI issued a letter of caution to which bank? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. So that's all for the day, students. Thank you and have a nice day. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्वेंट्स के लिए ये अवार्ड्स लॉन्च किए गए हैं। देन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में एक एक्सरसाइज हुई इक्विवेलेंट, जो त्रिवेंद्रम केरला में हमें देखने को मिली। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अभी मास्टर कार्ड के साथ पार्टनर किया गया ताकि ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाया जा सके इंडिया को। एंड देन भारत डायनामिक्स, इन्होंने सिक्योर किया ऑर्डर वर्थ 2400 करोड़ रुपीस इंडियन आर्मी से। ये सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा, काफी बेनिफिशियल सेशन रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च किया गया। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए ये अवार्ड्स लॉन्च किए गए हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनकी सर्विसेज के लिए, राइट, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, राइट, चाहे वो किसी सेक्टर में, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रूरल हाउसिंग, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, चाइल्ड वेलफेयर, तो इन सभी के लिए जिन्होंने काम किया है उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे ये अवार्ड्स को लॉन्च किया गया। ये अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाएंगे एंड 21 अप्रैल 2026 में ये अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाएगा। 21 अप्रैल क्यों? क्योंकि इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं सिविल सर्विसेज डे को। कहां पर ये अवार्ड्स होंगे? विज्ञान भवन में इन न्यू दिल्ली। इन अवार्ड्स के साथ एक ट्रॉफी, एक स्क्रोल एंड 20 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को या ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये जो अवार्ड्स रहेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स के लिए, इनोवेशन फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इन 3 कैटेगरीज में इन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड मालदीव्स, इनकी एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई इक्विवेलेंट। कहां पर हुई? त्रिवेंद्रम
केरला में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। त्रिवेंद्रपुरम एक्सरसाइज का नाम रहेगा, जो कि इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। इंडियन आर्मी एंड इन दोनों के द्वारा हुई कहाँ पर? त्रिवेंद्रपुरम केरला में। एंड ये 14th एडिशन है एक्सरसाइज का, राइट। 2 वीक्स लॉन्ग ये एक्सरसाइज रहेगी एंड 15 दिसंबर को ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इंडिया की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो 45 मेंबर का ये इंडियन आर्मी बटालियन था, गढ़वाल राइफल्स। इनका पार्टिसिपेशन इंडिया की तरफ से यहाँ पर हमें देखने को मिला। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देन अगर पूछा जाए 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट किए गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत, राइट। देन इंडियाज एम्बेसडर डेजिग्नेट टू यूएई कौन रहेंगे? दीपक मित्तल। कौन रहेंगे? दीपक मित्तल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ये लीड कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन का, IDPIC। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, पूछा जाएगा कि कौन दो बैंक यहाँ पे लीड कर रहे हैं इन IDPIC के क्रिएशन के लिए? वो है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के लिए, राइट। SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका काम क्या रहेगा? जो बैंक फ्रॉड्स होते हैं, राइट, उनको खत्म करना इन रियल टाइम, राइट। देन अगर हम बात करें इंडिया का जो GST कलेक्शन है वो 4.6% से बढ़ता हुआ दिखा टू 1.96 लाख करोड़। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया मास्टर कार्ड के साथ, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया को एज अ ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट के तौर पे, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन्होंने MOU साइन किया है मास्टर कार्ड के साथ। 2 साल का ये MOU रहेगा, ताकि इंडिया को एक ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाया जा सके। इससे क्या होगा? अगर इंडिया में टूरिस्ट बढ़ेंगे तो इससे क्या आएगा? पैसा आएगा, राइट। इकोनॉमी में मनी आएगा, राइट। जो लोग, काफ़ी ऐसी लोकेशंस हैं इंडिया में जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम बात करें गोवा की, राइट, गोवा के साथ साथ अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें पहाड़ों पे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनका रोजगार यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। काफ़ी ज़्यादा सीजनल भी होता है, लेकिन काफ़ी टूरिज्म के ऊपर यहाँ पे इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी एंड लोगों को रोजगार मिलेगा, लाइवलीहुड यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी, करेक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा मास्टर कार्ड के साथ ये पार्टनर किया गया, ताकि इंडिया को ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट के तौर पे बनाया जा सके। एंड 2 साल का ये MOU रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत डायनेमिक्स। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया, 2400 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर वैल्यू रहेगी। इंडियन आर्मी से इनको ये ऑर्डर मिला है, किसके लिए? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स का, राइट। ये 2 चीज़ों का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, राइट। ये इनको यहाँ पे बनाएंगे एंड एक्सपेक्टेड है कि 12 महीने के अंदर यहाँ पे ये डिलीवर हो जाएंगी। एंड इससे इंडियन आर्मी एंड इंडिया का जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होती हुई दिखेंगी, राइट स्टूडेंट्स। फिर इसी के अलावा सिटी यूनियन बैंक, इन्होंने अभी सिक्योर किया $50 मिलियन का एक लोन, या फिर हम बोलें एक तरीके का सपोर्ट फ्रॉम किससे? IFC, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का ही नाम है, राइट। तो सिटी यूनियन बैंक ने ये $50 मिलियन का अमाउंट सिक्योर करा है, ताकि MSMEs को इंडिया में सपोर्ट किया जा सके, इनको बूस्ट दिया जा सके, राइट, ताकि ग्रीन एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस यहाँ पे अपनाए जा सके। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा SBI स्टार अवार्ड्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, राइट, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एक्सीलेंस को यहाँ पे सम्मानित किया जा सके। SBI से ही रिलेटेड याद रखेंगे, SBI वो पहला बैंक बना जिन्होंने अभी रिसेंटली एक पहला गोल्ड ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। ऑन कहां पर? ये एग्जीक्यूट किया गया एट इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पे। तो SBI के द्वारा ये पहला गोल्ड और ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। इंडिया ने फिनिश किया 8th एट द वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन, जो कि ताइपेई ताइवान में हुआ था। ये लोकेशन याद रखेंगे। एंड इंडिया का यहाँ पे डेब्यू था, मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस वर्ल्ड स्किल्स एशिया चैंपियनशिप में। एंड हमारे देश की कौन सी रैंक आई? हमारी, हम 8th पोजीशन पर आए यहाँ पे। अगर हम बात करें सिक्योर किसने किया फर्स्ट पोजीशन, UAE ने यहाँ पे टॉप किया विद 10 अवार्ड्स, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 2 मेडेलियंस फॉर एक्सीलेंस। सेकंड पे सऊदी अरेबिया, थर्ड पे मलेशिया एंड हमारा जो देश है वो 8वें पोजीशन पे रहा। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ये जो इवेंट था वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन, इसका 3rd एडिशन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये 3रा एडिशन है। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस की।
आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बर्समैन स्कीम अभी रिलीज की गई 24-25 के लिए। बेसिकली यहाँ पे कितनी ग्रीवेंसीज आई हमारी, कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई, उसके बारे में रिपोर्ट आया, जो बताता है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो कंप्लेंट्स हैं 13.55% से इंक्रीज होती हुई हमें दिखी हैं, राइट। एंड जो ये जो कंप्लेंट्स आई हैं कस्टमर्स के थ्रू, सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड एंड लोन डिपार्टमेंट में ये रजिस्टर होती हुई दिखी। मतलब इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंप्लेंट्स हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि कंप्लेंट्स अब रजिस्टर हो रही हैं तो ये सॉल्व हो रही हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल इशू है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसको हमें सुधारना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्टेट से सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे ये कंप्लेंट्स देखने को मिली। तो जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं वो कहाँ से आई हैं? सबसे ज़्यादा कंप्लेंट चंडीगढ़ से देखने को मिली है, राइट। आई रिपीट, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट कहाँ से देखने को मिली? सबसे ज़्यादा कंप्लेंट चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान। तो चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। इन दोनों के द्वारा अभी एक $800 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया गया ताकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सके। वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में $500 मिलियन का लोन रहा ताकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा दिया जा सके एंड एग्रीकल्चर में सोलराइजेशन करा जा सके। तो यह है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की बात करें तो $190 मिलियन का लोन रहेगा। इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ये लोन रहने वाला है। फिर इसके बाद आ जाता है गुजरात स्टेट। गुजरात में $110 मिलियन का ये लोन रहेगा एंड गुजरात में ये जो लोन रहेगा बेसिकली स्किलिंग के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे कि असम में भी लोन प्रोवाइड कराया गया, $1 मिलियन का ये लोन रहेगा फॉर स्विफ्ट वेटलैंड एंड फिशरीज प्रोजेक्ट के लिए। एंड इंडिया को, पूरे देश को हमें रूफटॉप सोलराइजेशन करने के लिए कि रूफटॉप में घर, हाउस होल्ड रूफटॉप्स पर सोलर पैनल्स लगाए जा सके, इसके लिए $650 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन यहाँ पे दिया गया। तो 3-4 लोन हो गए, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश, गुजरात का, देन असम को एंड रूफटॉप के लिए ये लोन प्रोवाइड कराया गया। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया को दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर आरबीआई के द्वारा अभी 3 बैंक्स को, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों को यहाँ पे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के दर्जा दिया गया है। इनको आइडेंटिफाई किया गया है। इसका मतलब होता है ये बैंक टू बिग टू फेल है। मतलब अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है इन बैंक्स में तो सरकार यहाँ पे इंटरफेयर करेगी एंड इन बैंक्स को वो फेल नहीं होने देंगी, इन बैंक्स को वो खत्म नहीं होने देंगी। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है एंड दीज आर द बैंक्स जो कि इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया का पूरा मॉनेटरी सिस्टम कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं, काफी डिपेंडेंट है। तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। इसी के अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज याद रखेंगे, अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए आपसे, जरा बताओ प्रोजेक्ट सन कैचर ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट सन कैचर, तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट सन कैचर, ताकि सोलर पावर्ड एआई डाटा सेंटर को बनाया जा सके इन स्पेस बाय 2027, राइट। तो प्रोजेक्ट सन कैचर गूगल बना रहा है, करेक्ट। स्पेस में एआई डाटा सेंटर्स बनाने की बात की गई 2027 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अप्रूव किया 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसी के अलावा पावरिका लिमिटेड, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स एंड अनु प्रोजेक्ट्स का भी आईपीओ यहाँ पे अप्रूव किया गया। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, आरबीआई ने अप्रूव किया रेजर पे को एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? बेसिकली कि ये मर्चेंट्स के बेसिस पे मनी सेंड कर सकते हैं एंड मर्चेंट से पैसा रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गए पेमेंट एग्रीगेटर। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर मतलब इंडिया में भी एंड इंडिया के बाहर से भी ये पैसा सेंड कर सकते हैं एंड पैसा रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो इनको रेजर पे को अभी आरबीआई के द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का यहाँ पे दर्जा दिया गया। मूविंग ऑन, इकोनॉमी एंड बिजनेस पर आते हैं। अभी इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो की हम बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, बताया जा रहा है कि इंडिया का जो एफडीआई है वो 18% से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखा, राइट, जो कि है $35.18 बिलियन अप्रैल से सितंबर मंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो 18% से ये इनफ्लो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा टू $35.18 बिलियन। सबसे ज्यादा एफबीआई हमें कहाँ से देखने को मिला है? सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई देखने को मिला, सबसे ज्यादा सिंगापुर से 11.94 बिलियन डॉलर का। अगर हम बात करें यूएसए से, जो इनफ्लो था वो ट्वाइस होता हुआ दिखा टू
ऑलमोस्ट $6.2 बिलियन। वहीं पे अगर हम देखें थर्ड पे मॉरिशस $3.47 बिलियन। देन इंडिया में अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के लिए $9 बिलियन रिसीव हुए एज अ होल, सर्विस सेक्टर के लिए $5 बिलियन एंड ट्रेडिंग में $2.78 बिलियन हमें रिसीव होते हुए देखे। वहीं पे अगर हम देखें इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा हमें इनफ्लो देखने को मिला, तो वो है महाराष्ट्र में, देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु, देन हरियाणा एंड देन गुजरात, राइट। तो ये वो आप टॉप 5 डेस्टिनेशंस भी देख सकते हैं। सिंगापुर सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया, देन यूएसए, देन मॉरिशस, देन यूएई एंड देन केमैन आइलैंड्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की गई फॉर FY26 एट 6.7%। यहीं पे अगर हम फर्दर देखें 6.7% है 26 के लिए, 6.2% FY27 के लिए, 6.4% FY28 के लिए। वहीं पे इंडिया का अगर इन्फ्लेशन डाटा देखें 1.9% FY26 के लिए, 3.4% FY27 के लिए। मूविंग ऑन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अरमान ड्यूप्लेंटिस, राइट, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्वीडन के प्लेयर है। पॉल वॉल्टर है एंड ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रहे, मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, राइट। ये थर्ड टाइम है कि ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रहे। इससे पहले सन 2020 में, देन 2022 में और अब 2025 में ये यहाँ पे इनको खिताब मिला। देन मैकलिन लेब्रॉन, राइट, ये आप देख सकते हैं इन द राइट साइड, ये अमेरिका की हैं, राइट, स्प्रिंटर है एंड ये वीमेन एथलीट ऑफ द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रही 2025 की, राइट। तो आप इन दोनों को मार्क करके चलेंगे। मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अरमांडो ड्यूप्लेंटिस एंड सिडनी मैकलिन लेब्रॉन, ये वीमेंस कैटेगरी में वीमेन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रही। मूविंग ऑन, देन बात करते हैं मैंड्रिन ऑरेंज, राइट, इनको जीआई टैग मिला है। ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, वहां का प्रोडक्ट है एंड इनको यहां पर अभी जीआई टैग मिला। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक पे। डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम को चंडीगढ़ में, राइट। आप ये एस्केप सिस्टम देख सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम पर जो पायलट्स हैं वो इजीली एस्केप कर सकें, राइट, इजेक्ट कर सकें, करेक्ट। तो इसको टेस्ट किया गया है, इस सिस्टम को चंडीगढ़ में टेस्ट किया गया, डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया है एंड लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में ये सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, करेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एंड फॉर पायलट की सेफ्टी के लिए काफी बेनिफिशियल है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी ने भी कंडक्ट करा कॉम्बैक्ट लॉन्च ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। बे ऑफ बंगाल में ये मिसाइल्स अभी टेस्ट की गई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये, राइट, जिनको अभी टेस्ट किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा टेस्ट किया गया है। कहां पर टेस्ट किया गया है? बे ऑफ बंगाल में इनको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है स्लेवरी को खत्म करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड मैरिज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इन सब को खत्म करने के लिए ये डे अवेयरनेस क्रिएट कराता है एंड इसको हमने अभी ऑब्जर्व किया। अगर बात करूं मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, गिलबर्ट एक्स फोंगबो यहाँ के डायरेक्टर जनरल रहेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर रहेगा एंड 1919 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, राइट, उनके जो राइट्स हैं, करेक्ट, जो उनकी डिग्निटी है, जो उनकी वेलबींग है, उनको प्रमोट करने के लिए, राइट, उनकी हेल्प करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम है स्टूडेंट्स, फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। ये थीम जरूर मार्क करके चलेंगे, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। बिहार के द्वारा भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। ये बेसिकली क्या है, जो सीनियर सेकेंडरी बच्चे हैं, करेक्ट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट होगा एंड उन बच्चों को यहाँ पे इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की हिस्टोरिक, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है कि वो जाएं एंड अपना एक हॉराइजन, अपना जो दरिया है सोच का, वो यहाँ पर उनका बढ़ सके, क्योंकि वो ट्रैवल करेंगे, चीज़ें देखेंगे, इंडिया के कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे, तो इनसे उनकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स को जो कि स्टेट रन सेकेंडरी स्कूल्स में है, गवर्नमेंट स्कूल्स में है ऑफ बिहार, उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है बिहार के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं फर्स्ट एवर, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की वीमेंस क्रिकेट टीम ने अभी पहला आईसीसी वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप को जीत लिया है, मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसी के अलावा अगर पूछा जाए
वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 30 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड सैंडविच डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 3 नवंबर को। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 5 नवंबर को। नेशनल या फिर हम बोले इन्फेंट प्रोटेक्शन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये भी हम 7 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं, इनको ज़रूर देखा करो। काफ़ी रिफाइंड वे में, जैसे आज की वीडियो थी, काफ़ी रिफाइंड वे में हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी लर्निंग बेटर हो सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड इसके बेसिस पे वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपकी MCQ फॉर्मेट में रहती है ऑन द बेस्ड ऑफ द कंटेंट जो हम आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। तो ये वीडियोस जरूर देखा करो। एंड उसके बाद लर्निंग के लिए, रिवीजन के लिए ये MCQ बेस्ड वीडियोस जरूर देखा करो। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पे। फिर आ जाते हैं, किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली इन द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अगस्त इन कजाकिस्तान। तो किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में? तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप ये रहेगा। यहाँ पे इंडिया के टोटल 99 मेडल्स रहेंगे, जिसमें से 50 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं एंड 23 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कहाँ पर पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 हुआ? राइट, जहाँ पे इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट करेगा इस इवेंट में। इनॉग्रल एडिशन रहेगा, या फिर हम बोले पहली बार पार्टिसिपेट किया जाएगा इंडिया की टीम के द्वारा इन दिस पिकल बॉल वर्ल्ड कप। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये? तो ये फ्लोरिडा USA में हमें पिकल बॉल वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हु वन द 35th एडिशन ऑफ द डच ग्रैंड प्रिक्स, जो कि नीदरलैंड में हुई। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे 35वां एडिशन ऑफ डच ग्रैंड प्रिक्स का जीता गया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 29th एडिशन ऑफ द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, मीन्स A B हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये गलत है, राइट। एंड A सही है, C सही है, B इज रॉन्ग, विच इज आवर आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। B कह रहा है कि शेन यूफी फ्रॉम चाइना इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता। तो नहीं, किनके द्वारा जीता गया? अकाने यामागुची के द्वारा, राइट, जो कि जापान से हैं। ये वीमेन सिंगल टाइटल जीता गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं, किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली को ऑफ द 25th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो किस कंट्री ने टॉप किया यहाँ पे मेडल टैली में? हमारे इंडिया के द्वारा मेडल टैली में टॉप किया गया। फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने सितंबर में अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, कंक्लूडिंग एन इलस्ट्रियस करियर दैट स्पैन्ड ओवर मोर देन 2 decades। तो अमित मिश्रा, राइट, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया। तो कौन है? जलवीर वो मैस्कॉट का नाम रहेगा। फिर आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने 12वां एडिशन जीता ऑफ द मेंस हॉकी एशिया कप टाइटल बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया बाय 4-1 इन द फाइनल्स इन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बिहार। तो मेंशन दैट कंट्री, क्या नाम रहेगा उस कंट्री का? वो है इंडिया। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, किन्होंने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता अभी रिसेंटली? तो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया बाय मैक्स वर्स्टैपेन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर 28वां इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का, एशियन टेबल टेनिस यूनियन का एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप, ये अभी कहाँ पर हमें देखने को मिला इंडिया में? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में ये हमारा इवेंट हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे, इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर डैश, क्या फर्स्ट एवर क्या रहेगा? 5150 ट्रायलथॉन को चेन्नई तमिलनाडु में। एंड ये पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है। अगर यहीं पे हम देखें तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 3 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं इसके लिए। एंड ये 3rd एशियन नेशन है जो इसको होस्ट कर रहे हैं, एंड 6th वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इसको ऑब्जर्व किया जाता है कब? 9 सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, थीम ऑफ वर्ल्ड EV डे, क्या थीम रहेगी वर्ल्ड EV डे की? तो थीम है द बेटा मैनिफेस्टो, ये थीम रहेगी। 9 सितंबर को वर्ल्ड EV डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 11 हम ऑब्जर्व करते हैं 12 सितंबर को। नेक्स्ट, हिंदी दिवस या फिर हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 सितंबर को। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 1949 में
हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। फिर आ जाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होता है O3, राइट। तो इसकी थीम पूछी गई है, क्या रहेगी? तो थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये हम ऑब्जर्व करते हैं कब? तो 16 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी। ये हर साल ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को एंड इट इज़ टू कमेमोरेट द फर्स्ट कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी जो कि 1977 में हुई थी। किसके द्वारा? एंड्रास रोलैंड जी के द्वारा, जो कि जर्मन फिजिशियन साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया जाता है यूएन के द्वारा। कब? इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट बैम्बू कॉन्क्लेव हुई ऑन द बैम्बू डे। बैम्बू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो बैम्बू डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को एंड ये कॉन्क्लेव असम में हुई थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है अभी, करेक्ट। कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड क्लीन अप डे। ये 20 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ क्लीन अप इनिशिएटिव एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इवेंट फोकस करता है टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट पे। टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस विद इन एंड अमंग ऑल द नेशंस एंड पीपल। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 सितंबर को। नेक्स्ट, वर्ल्ड एल्जाइमर डे। एल्जाइमर बेसिकली एक डिमेंशिया का ही फॉर्म में होता है, जहाँ पे लोग भूलने लगते हैं चीज़ों को। ओल्ड एज में ये जनरली होता है, राइट। तो आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट एल्जाइमर, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड राइनो डे। ये 22 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड राइनो डे एंड बेसिकली पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इतने राइनो पॉपुलेशन कितने नंबर के आसपास स्टेबलाइज हो गई? तो 27,000 पॉपुलेशन के आसपास राइनो की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो गई है। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड कार फ्री डे सेलिब्रेट किया जाता है टू अवॉइड यूजिंग कार फॉर अ डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को। नेक्स्ट, कंट्री ने अभी जीता सेकेंड एडिशन ऑफ द सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप को, जो कि बाइनियल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है इन सेंट्रल एशिया, करेक्ट। तो किसके द्वारा जीता गया? उज्बेकिस्तान के द्वारा इसको यहाँ पे जीता गया। उज्बेकिस्तान ने ईरान को फाइनल में हरा दिया बाय 1-0। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स अकेडमी जिन्होंने अर्न किया एक प्रेस्टिजियस एफिलिएशन विद द एशियन हॉकी फेडरेशन विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो आइडेंटिफाई करो स्पोर्ट्स अकेडमी को, वो है राजकीय स्पोर्ट्स अकेडमी। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने टॉप किया इन द मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि लिवरपूल इंग्लैंड में हुई। तो मेंशन दैट कंट्री, वो है कजाकिस्तान। नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंट्री ने डिफीट किया इंडिया को इन द फाइनल्स टू विन द 11th वीमेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड इन हांगझो, चाइना। तो विच कंट्री डिफीटेड? किस कंट्री ने डिफीट किया? वो है चाइना के द्वारा यहाँ पे डिफीट किया गया। नेक्स्ट, इन सितंबर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन हाई जंपर टू क्वालिफाई फॉर द मेंस हाई जंप फाइनल एट द 20th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि टोक्यो जापान में हुई। तो सर्वेश कुशारे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है किस कंपनी को ऑफिशियली नेम किया गया एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम अंटिल 2027। तो अपोलो टायर्स यहाँ पे ऑफिशियल इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जर्सी स्पॉन्सर बन गए हैं। इससे पहले ड्रीम 11 थे, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई थी, राइट। उन्होंने अपना बिजनेस बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई थी। अब ये वेंचर कर रहे हैं किसमें? ब्रोकिंग बिजनेस में, जैसे ग्रो हो गया, जरोद हो गया। तो ऐसे ही अपना खुद का प्लेटफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब इनकी जगह पे अपोलो टायर स्पॉन्सर कर रहा है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम को। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टीम ने डिफीट किया साउथ जोन को टू विन द 62nd एडिशन ऑफ द दुलीप ट्रॉफी इन द फाइनल एट BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु, कर्नाटका। तो किस टीम ने डिफीट किया साउथ जोन को? ये डिफीट किया गया सेंट्रल जोन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन सितंबर सैमुअल उमतीती इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल एट द एज ऑफ 31। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। Next students is our homework section. First question is who became the first billionaire or first football billionaire? Second question, tell me recently which company is setting up the Asia's largest data center in India and the location where this data center will be set up. Third question students,
tell me recently ICICI Bank, they partnered with which, is it Visa, MasterCard or RuPay? Right, so ICICI Bank partnered with which one of them to launch a corporate Sapphiro Forex card? Then fourth question, recently NPCI, they partnered with which organization to integrate UPI in their ecosystem for promoting UPI transactions globally? Then fifth question, tell me recently RBI, they have issued a letter of caution to which bank, right, over KYC compliance? So RBI issued a letter of caution to which bank? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. So that's all for the day, students. Thank you and have a nice day.